वेलकम टू 50 शेड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम बात करेंगे 10 वेज और 10 एक्सप्रेशंस टू से नो व्हेन यू मीट समवन। और आपको कोई दोस्त आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपको कहीं साथ लेके जाना चाहता है, आपको पार्टी ऑफर कर रहा है या आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाने को कह रहा है एंड समहाउ यू आर बिजी एंड यू वांट टू से नो. So here are the 10 ways to say politely no. So that you should look like you are an educated, sophisticated person, and at the same time you should look like you are accepting his offer, but you are just sorry for not being able to. Let's see. Number 1. No thank you. I won't be able to make it. आपका बहुत शुक्रिया लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा. Number 2. No, sorry. I have other commitments. मुझे अफसोस है, मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं इसलिए मैं नहीं आ सकता. नंबर 3. आई एम अफ्रेड इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर दिस. मुझे अफसोस है, ये बहुत मज़े का काम बताया आपने लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है, मुझे कहीं और जाना है. नंबर 4. सैडली आई हैव समथिंग एल्स टू डू. मुझे अफसोस है लेकिन मुझे कुछ और करना है. और नंबर 5. साउंड्स ग्रेट बट आई कैंट कमिट. ये बहुत मज़े का लग रहा है लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम गोइंग समवेयर एल्स. और नंबर 6. oops, I am sorry, I'm booked into something else. मुझे अफसोस है लेकिन मेरी पहले से कहीं और बुकिंग है, so I'm going there. और नंबर 7. oh shit, I have other irons in my fire. So irons, to have irons in one's fire is an idiomatic expression when you're doing a lot of things at the same time. So this is like you have a lot irons in your fire. जब आप एक ही वक्त पे बहुत सारे काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसे वक्त में ये वाला इडियम बोलते हैं. आई एम सॉरी बट आई हैव अदर आयरन्स इन माय फायर. और नंबर 8. सॉरी आई विश आई कुड बट काश मैं कर सकता लेकिन मुझे अफसोस है, मैं नहीं आ सकता. और नंबर 9. आई वुड लव टू बट आई कैंट. मुझे आपके साथ जाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं जा सकता. और लास्टली यू कैन से ओह थैंक्स फॉर द चांस बट आई कैंट. आपने मुझे चांस दिया, आपका बहुत शुक्रिया लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. सो दीज आर द 10 ways or 10 expressions to say politely no to someone's offer. That's it for today. See you next time.